I'm living currently in the U.S. in Memphis, Tennessee. This is one of our famous streets. It's called Bill Street. We're known for lots of different music, like blues music, Elvis Presley, barbecue. So if you ever come to visit us, this is a fun street to come and visit. When we think about TAND spectrum, this is one way to look at it as an umbrella diagnosis. TAND, first and foremost, not everyone with tuberous sclerosis will have TAND. But it's important for us to screen. And when we're screening, we're looking at these different levels. And so each area of the umbrella, each color represents a different level. So we have the behavioral level in the light pink, the psychiatric level, intellectual level, academic level, neuropsychological, and psychosocial. And we'll look at that again on the TAND checklist. And when we talk about TAND screening, again, it's important whether there are symptoms or not symptoms to try to do this regularly. And this is what our surveillance recommendations indicate. Okay. So we want to screen for TAND at least annually. And then we want comprehensive formal evaluations at these key ages. So 0 to 3 years and then so forth. And what we mean by comprehensive formal evaluation, the screening itself is really going through the TAND checklist, and we'll talk a little bit more about that. A comprehensive formal evaluation, the way we define that, is an examination by either a child neurologist or a neurodevelopmental neurologist or a developmental pediatrician, a formal evaluation by a speech and language pathologist, and a neuropsychological evaluation at the least. And then we want to know that if there is a formal diagnosis, in addition to tuberous sclerosis, if your child or loved one has been diagnosed with intellectual disability or autism or ADHD, there do exist practice parameters about those specific diagnoses. So there are guidelines for autism, for ADHD, for intellectual disability. And we want to make sure that those guidelines are being followed in addition to what we know about tuberous sclerosis. And then next we want to consider the need for what's called an individualized education plan. That's the way we term it in the U.S. But exactly what it means is a structured approach to how the child should be educated. Children and young adults all have a right to education. It may just need to be modified for that particular child's needs. And so that's what we need here. We had a great talk in Mumbai from a special educator about the different educational opportunities for patients here in India. And they make wonderful accommodations for children and young adults. And then we'd like a medical evaluation in the case that there's a sudden behavioral change. Now, you all should have gotten a packet, and especially the parents. If you look in your packet, there should be a TAND checklist. Would you pull that out for me now? Would it be helpful for translation? At the end, we will do it because it will be difficult to do it in between. It's okay if you want to do it at the same time if I'm going to explain to you. So if you don't have a TAND checklist, please raise your hand. Do all the parents have their TAND checklist? And we're just pausing a moment to make sure that all the parents are aware of what we're discussing. Okay. I'll make the translation for that. Okay, wonderful, wonderful. Okay, perfect. Okay,
So what you guys have in your hands is called the TAND checklist. When I mentioned screening for TAND every year, this is where we start. And the TAND checklist was created to specifically give us an idea of what sorts of things might be, that folks with TSC might be at highest risk for. If you look with me at the very first section asks about early development, the age at which children accomplish different milestones. The second section asks about current development. So how is your child or loved one? How do they speak? How do they care for themselves? And how mobile they are. Section 3 is kind of going over the different behavior types that can happen in tuberous sclerosis. And although these questions are, we're asking a yes or no in this particular checklist, when we're doing this with families, we want to know not only whether or not these symptoms are present, but if they've ever been present. We also want to know what are the triggers, what are the things that make those behaviors worse. I joined you here to translate. Oh, that would be wonderful. Yes, yes. Would you like the mic? Yeah. Would you like me to back up or just start from where you are? So अभी तक मैम ने बताया है कि आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ पहचान है जो इसमें दी गई है, जिसमें पता लगेगा कि आपका बच्चा नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, समझ रहा है, हर रोज की रोजमर्रा की एक्टिविटीज कर रहा है, अपनी सेल्फ केयर कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने पहले 3 महीने में क्या सिम्टम्स हुए कि बच्चे ने कब स्माइल किया, कब उसने हाथ बढ़ाया, कब बैठा, वो बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि बच्चे के बोलने में किस तरह से उसकी डेवलपमेंट आई, क्या वो शब्द बोलता है, क्या वो सेंटेंस बोलता है, क्या वो फ्रीली कम्युनिकेट करता है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट मतलब लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन कर सकता है बच्चों के साथ मिलके या नहीं कर सकता, क्या वो अपने आप को देख सकता है, अपनी देखभाल कर सकता है या उसकी देखभाल में ज़रूरत लेनी पड़ेगी। अब तीसरी पार्ट वो बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं। So we are at 3 now. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. And welcome to our new families. What we're doing right now is we're going through the TAND checklist. You have it in there in your packet, and we're on section 3. नंबर 3 निकाल लीजिएगा इस पैम्फलेट के अंदर। नंबर 3 पेज 2 पे है। पेज 2 पे नंबर 3 जहाँ पे 03 लिखा है वो पार्ट खोल लीजिएगा। All right. And at the end of section 3, and you'll see this at the end of each section, after we ask questions, these yes or no questions, have these things been a problem? Then we want to know, has there been a formal evaluation or support? And that's a yes or no question. And then would you like formal evaluation or support? जो नंबर 3 है वो अपने पेशेंट के हिसाब से, अपने बच्चे के हिसाब से इसको भरते जाइए। इसके अंदर 2 जवाब हैं, नो मतलब कि नहीं है, यस मतलब कि है। एंजाइटी मैंने कि वो बहुत फिक्र में रहता है, डिप्रेस्ड मूड मैंने बहुत चुपचाप रहता है, अपने के अंदर रहता है। एक्सट्रीम शाइनेस तीसरे नंबर पे है, जिससे कि वो और बच्चों से घुलता मिलता नहीं है। मूड स्विंग्स मैंने वो कभी बहुत खुश है, कभी रोता है, कभी मतलब इसका बिहेवियर स्थिर नहीं रहता। एग्रेसिव आउटबर्स्ट मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, आउट ऑफ द वे चीज़ें तोड़ना, फोड़ना, करना, ये चीज़ें। और टेम्पर टैंट्रम्स भी इसी तरह की, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है बिना छोटी सी बात पे। खुद को मारता है, जी पे है, सेल्फ इंजरी, खुद को मारना, खुद को काटता है, मारता है, अपने आप को जी कराता है, कुछ भी ऐसी इस तरह की एक्शन। एच पे है एब्सेंट और डिलेड ऑनसेट ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि उसने बोलना नहीं शुरू किया आपके साथ। आई पे है कि वो कोई शब्द या जो चीज कहना चाहता है वो बार बार कह रहा है, कार दो, कार दो, कार दो, कुछ भी इस तरह वो शब्द कहता है वो बार बार कहता जाता है। ये आ गया आई पे। फिर चलिएगा जे पे। जे के मतलब पुअर आई कांटेक्ट, आप उसकी तरफ देख रहे हैं, वो आपसे आंख मिला के बात नहीं करता, वो कहीं और देख रहा है, आप कहीं और बात कर रहे हैं।
आंख नहीं मिलाना, मतलब आपकी तरफ वो गौर नहीं कर रहा। डिफिकल्ट के मतलब कि और बच्चों के साथ, अपनी हम उम्र बच्चों के साथ वो अच्छे से मिलता नहीं है। अगर वो है तो उसको यस करिए, नहीं है तो उसको नो करिए। रेपिटेटिव बिहेवियर्स मतलब वो वही चीज बार बार करता जाता है। कोई बच्चे कोई चीज पकड़ के घुमाते हैं, कोई चम्मच खींचते हैं, कोई बॉल से ही खेले जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज जो वो बार बार आउट ऑफ द वे करता जाता है। इनफ्लेक्सिबल एम पे मतलब कि वो जल्दी से कहना नहीं मानता। ओवर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, मैंने हर वक्त वो उसकी मशीन एक तरह से जारी है, ऑन द गो है हर वक्त। पेइंग अटेंशन मतलब कि वो आपके साथ ध्यान से आप कुछ सिखा रहे हैं, वो नहीं सीख पा रहा। रेस्टलेसनेस, फिजिटीनेस, मैंने वो हर वक्त हिलता है, कुछ ना कुछ करता है, टिक के नहीं बैठ सकता, टिकाऊ नहीं है। इम्पल्सिविटी मतलब 4 बच्चे बात कर रहे हैं, उन बात के अंदर बीच बीच में वो बात टोकता है अपने शब्द से, अपनी टर्न के लिए वेट नहीं करता। फिर उसके बाद ईटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बहुत थोड़ा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, अलग से खाता है फैमिली से। स्लीप डिफिकल्टीज मतलब वो रात को सुलाने के वक्त बहुत देर उसे उठा के झुला के सुलाना पड़ता है, सहला के सुलाना पड़ता है, वो सोता नहीं अच्छी तरह अपने आप, या सोने के बाद वो बार बार उठता है। Wonderful. तो ये आप टिक करिएगा अपने बच्चे के। Absolutely. And then in section 4, what we want to know is, have those behaviors added up to a formal diagnosis? Because you can have behaviors, a child can be hyperactive and not necessarily have ADHD. So we want to know if any of the following in section 4 have been formally diagnosed, and if so, when and by whom. अब ये जो सारे सिम्टम्स जो हैं, इसके बेसिस पे बच्चों को डायग्नोज किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे कि वो इसके बेसिस पे डायग्नोज हो सकते हैं कि वो ऑटिस्टिक है, माइल्ड ऑटिस्टिक है जिसमें स्पीच ज्यादा इन्वॉल्व है, सोशलाइजेशन ज्यादा इन्वॉल्व है। फिर इनको ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब कि ये 2 चीजें आ गई, एक अटेंशन की, एक हाइपर एक्टिविटी। तीसरी आ गई एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें बहुत ज्यादा घबराहट में रहते हैं, बिहेवियर स्थिर नहीं रहता। डिप्रेसिव मैंने बहुत ज्यादा ढीले रहते हैं, मेल जोल नहीं करते और फैमिली मेंबर्स के। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब जो चीज करना चाहते हैं बहुत वो ही करते हैं और स्लो रहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया मैंने बिहेवियर उनका बहुत ऊपर नीचे चलता है। ये सब चीजों को देखते हुए आपके बच्चे का डायग्नोस किया गया है इनमें से किसी कैटेगरी में या नहीं, और किया गया है तो किसने किया है या किया ही नहीं गया। And then in section 5, what we're asking in that question there is about intellectual disability. Now, a long time ago, intellectual disability used to be referred to as mental retardation. We've updated that terminology to intellectual disability. And what we want to know is, has intellectual disability been formally tested for by either a psychologist or a neuropsychologist? And additionally, we want to know what you guys as parents, what's your view of your child's cognitive functioning? उसके बाद इनके मेंटल फंक्शंस कहते हैं, इन चीज की कभी एक फॉर्मल इवैल्यूएशन हुई है देखने के लिए कि आपका बच्चा मेंटली नॉर्मल है या नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि इन बच्चों को पहले हम मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, जो अब टर्म नहीं यूज होती, इनको अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, जो इनके लिए ज्यादा इज्जतवार शब्द है। ठीक है, तो ये चीज इनके नंबर होते हैं, नॉर्मल इंटेलिजेंस की कैटेगरीज होती हैं और उससे नीचे इसमें कैटेगरीज हैं 20 से कम, 20 और 30 और 80 से ज्यादा, हर 20-20 का स्लैब है जिसमें इनको कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि उसके बेसिस पे समझाया जाता है कि ये क्या कर पाएंगे और इनसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी। ये चीज आपके बच्चे में कभी की गई है या नहीं? In section 6, we want to know about academic performance. We want to know if there's any trouble or concerns with reading, math, or writing. And if so, is the school doing anything to personally accommodate your child? जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको कुछ स्पेशल डिफिकल्टीज आ रही हैं, पढ़ने की, लिखने की, समझने की,
और बच्चों से मिलने की, मैथमेटिक्स की, स्पेलिंग्स की। तो ये देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में उनकी डिफिकल्टीज मैक्सिमम है, किस प्रकार से है। तो ये चीज़ आपके बच्चे में इवैल्यूएट की गई है या नहीं, और स्कूल किस तरह से आपके बच्चे को अकोमोडेट कर रहा है और आपको क्या समझा रहा है, आपको क्या तरकीब दे रहा है, जिससे कि आप ये चीज़ अपने बच्चे में सुधार पाएं। And then in section 7 is most applicable to either young adults or older children who are a bit higher functioning. And what we want to know there is what's their memory like? How are they able to plan? How are their visual spatial skills, for example? 7वें सेक्शन में ये हमारे बच्चे की थोड़ी हायर लेवल ऑफ एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है कि उनकी याददाश्त कैसे है, उनकी फोकस और अटेंशन कैसे है जब हम उनको पढ़ना लिखना सिखाएं। क्या एक चीज़ से हटके दूसरी चीज़ वो फौरन कर सकते हैं, या बहुत समय लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो जल्दी से दूसरी चीज़ नहीं कर पा रहे, पढ़ रहे हैं तो जल्दी से खाना नहीं खा पा रहे, या पढ़ रहे हैं तो और बच्चों से खेल नहीं पा रहे। और फिर उसके अंदर कि लिखने की उनकी स्किल्स किस प्रकार की हैं, बोर्ड से कॉपी करना ठीक करते हैं या नहीं, और बाकी चीज़ें प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना कि वो दिन में कैसे अपना दिन बिताएंगे, कैसे करेंगे, ये चीज़ की स्किल्स एनालाइज की गई हैं या नहीं, और किसने की। And then in section 8, we get a little bit more personal. We want to know about impact on self. So how is your loved one's self-esteem? Are they starting to get down on themselves, or do they have a pretty high opinion of themselves? And then we want to know how you as a family are doing, and that's very important as well. For couples, we want to know, is there any trouble in the relationship now because of the impact of raising a child with tuberous sclerosis? And then how are the siblings who are non-affected, how are they reacting to their sibling with tuberous sclerosis? 8वें सेक्शन में वो ये पता करना चाहती हैं कि जो बच्चे हैं जो अब बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे या बड़े हो गए, एडोलेसेंट हो गए, वो अपने आप को दूसरों से भिन्न, अलग, बराबर समझते हैं, या उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम कम है, मतलब वो परेशान है कि वो नॉर्मल दिखते नहीं, नॉर्मल कर नहीं पाते, या वो कॉन्फिडेंट है अपने आप। ये चीज़। दूसरा कि इन बच्चों की बाकी के बच्चों से जो नॉर्मल है उनके साथ रिलेशनशिप उनकी कैसी है, क्या वो दूसरे बच्चे भी इनको अच्छी तरह देखते हैं, इनसे सहानुभूति करते हैं या नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे माँ बाप हैं, आप उन बच्चों को किस प्रकार से देखते हैं। एंड मैम, आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग, इफ वन ऑफ द पेरेंट्स is also has the symptom of disease, has there been a change in the relationship between the spouse? Yes, that's a good one. It's a good one. Okay. So मतलब जैसे कि आप रियलाइज करते हैं कि एक पेरेंट को फेस में वही है जो पता लगता है कि इस पेरेंट से गया, तो आपके हस्बैंड वाइफ में कुछ अंतर आया आपके बिहेवियर में या नहीं। Section 9 asks, after we've kind of gone through all of these questions, Section 9 asks you to rank or give a score to how impacted you feel about these symptoms. Sometimes if it's two parents filling it out, the mother and the father may have differences in their impact score. A 0 means we have some concerns, but we're not impacted at all. A 10 means we are heavily burdened, we are stressed, and we're at our limits. And then 5 is kind of in the middle. So you can choose between those numbers and give a score. ये 9वां दोनों पेरेंट्स को, माँ बाप को अलग अलग रेट करना है। उसमें ये लिखा देखना है कि आपको अपने बच्चे की प्रॉब्लम से कितनी परेशानी है। 0 अगर आप उस परेशानी को ज़्यादा परेशानी नहीं मानते और परेशान नहीं है। 10 अगर आप बहुत परेशान हैं अपने अंदर उस चीज़ के लिए, और इसको रेट करिए 0 से लेके 10 तक। 5 मिडिल में है कि परेशानी है लेकिन आप संतुलित हैं उससे। And then in section में से सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें जो आपको कंसर्न करी हैं, एग्जाम्पल की उसके दौरे कंसर्न की हैं, उसकी लुक्स कंसर्न की हैं, उसका बिहेवियर कंसर्न की, जो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती हैं उनको आप लिस्ट करें। And then in section 11 asks if there's any other concerns that we didn't cover that the TAND checklist may have left out, and that's your opportunity to discuss those concerns.
अगर आपको इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इस शीट के अलावा तो वो भी आप रेज करिए, उनको डिस्कस किया. And then in section 12, the person that's working with you or interviewing you can also give an impact score as to how they think you're doing. तो उसके अंदर जो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी जजमेंट आपकी करेगा कि क्या आप जो रिएक्शंस हैं आपके सही हैं, ज़्यादा है, कम है, और उनको कैसे मैनेज किया. And so now that you have this, there's a couple of things to think about. One is that the intention of this TAND checklist is to be reviewed with a professional. It also gives you an opportunity to get out all of these questions. Because sometimes in tuberous sclerosis, and the reason this terminology was come up with, we get so focused on the epilepsy and the tumors, and those are important. Please don't mistake me. But so is TAND. And we need to be checking for these things too, not after we do the other things, but at the same time. तो इन चीज़ों को साथ के साथ जजमेंट करना, इनकी रिएक्शन करना, इनकी इवैल्यूएशन करनी बहुत ज़रूरी है हमारे साथ. Another way that we use this TAND checklist is once this is completed, what they've discovered is that certain symptoms kind of go together, and we call that TAND clustering. As a family right now, what we're hoping to do next is use these clusters to inform how we treat. But it's important for you guys to know that not everybody will have every symptom at a time, but they can kind of group together. ये जो बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं इसके अंदर, ये कई दफ़ा झुंड में आते हैं कि वो ऑटिस्टिक भी है, उसके अंदर एग्रेशन भी है, उसके अंदर ऐसे अलग अलग झुंड होते हैं. इसको क्लस्टर कहते हैं कि ये कौन से सिम्टम आपके बच्चे में क्लस्टर करते हैं. ये लगातार एक ही क्लस्टर है या ये बदलता है समय से समय. And I'll give you kind of an overview of each cluster. So one is the behavioral dysregulation cluster. In that cluster, there's aggression, self-injury. तो ये क्लस्टर्स इन्होंने जैसे दिखाई थी ना छाता, उसके अंदर कि ये सिम्टम्स को क्लस्टर किया गया है. पहला क्लस्टर है बिहेवियर्स का, कि गुस्से में है, क्वाइट है, शाई है, बहुत एग्रेसिव है. Okay. And then there's the mood and mixed disorders cluster. In that cluster, there can be depression, sleeping difficulties, trouble with memory. दूसरे के अंदर है कि वो सोता नहीं, वो बहुत चुप रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, मिलता नहीं, सोशलाइज नहीं करता. सेकंड क्लस्टर. Third cluster is hyperactive impulsive type subcluster, and that's trouble with impulsivity, overactivity, restlessness. तीसरा क्लस्टर है जब ये बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, सडनली कुछ करते हैं, बैठते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं, हर वक्त ऑन द गो रहते हैं. ये एक हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी का केस है. The next cluster is the neuropsychological cluster, and that's the cluster, again, that's questions in section 7. Folks that are a bit higher functioning, young adults, where they have trouble with attention, multitasking, planning. अगला क्लस्टर है जब ये बच्चे थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब नॉर्मल की तरफ होते हैं, उसके अंदर इनके फाइन काम करने की, ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी लाइफ को रेगुलेट करने की डिफिकल्टीज आती हैं, जो सेक्शन 7 में बताई गई. The next cluster is the autism spectrum disorder-like cluster. In that cluster, what we're concerned with are repetitive behaviors, trouble with speech and language. अगला क्लस्टर है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम बिहेवियर का. ऑटिज्म के अंदर होती है कि इसके अंदर सोशल कम्युनिकेशन नहीं होती, बोलना नहीं होता, और थोड़ी सी बिहेवियर का चेंजेस. ये ऑटिज्म वाला, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम वाला क्लस्टर का बिहेवियर. And in the last cluster, that's the scholastic cluster, where the majority of the concerns are focused around how an individual is doing in the school setting. लास्ट क्लस्टर है स्कोलास्टिक, मतलब जिसमें हम स्कूल में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश में मुश्किल है, मैथ्स में मुश्किल है, लिखने में मुश्किल है. इस तरह का क्लस्टर है जहाँ पे कि एजुकेशनल स्टडीज में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिस्ट कर दिया. And so next what I'd like to do is, I reached out to Shobha, who's one of the co-founders of the TS Alliance of India, and I asked her what are some questions that parents have.
She sent me a list of questions. I summarized them here, and we're going to talk about them. But first, I'd like to just take you through a list of kind of some questions that actually came from the community. The first question. I'm just going to tell them what the question is. The first question is, my son knows and understands everything but does not talk. Even if we make him repeat words, he forgets it soon. What can be done? मेरा बच्चा समझता है, हमें लगता है, लेकिन बोलता नहीं है और भूल जाता है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? My son is 4 years old. He gets agitated very often. He can't express himself. 4 साल का है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपनी ज़रूरत बता नहीं पाता. My son's understanding is very poor, hence he does not follow any instruction. मेरा बच्चा समझता नहीं है, हम उसे जो कुछ भी बोले, वो समझ के वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाता. My son has sensory issues. He flaps his hands. He needs pressure in his lower back and legs. मेरे बच्चे को सेंसरी इश्यूज हैं जिसके अंदर कि उनको कोई टच, प्रेशर या कुछ ना कुछ करते जाने का आदत पड़ जाती है. My son is very stubborn and insists on certain things. He does not listen and has meltdowns. बहुत जिद्दी है और जल्दी से बहुत गुस्सा होके जैसे फर्श पे लेट जाएगा, आग जाएगा, मतलब इस तरह की उसको सडन प्रॉब्लम्स, एक्यूट प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें मेल्टडाउन्स कहते हैं. My 4-year-old son touches his urinary organs a lot. ये बच्चे कभी-कभी अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं बार-बार. ये कई दफा सोसाइटी में भी छूते हैं, वैसे भी छूते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपके बच्चे में है. My son needs someone to sit with him at all times. He does not like to be left alone. He is happy when someone sits with him. He then plays happily by himself. बच्चे को आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है. वो पसंद करेगा कि आप बैठो उसके साथ, तब वो खेलता है, अपने आप करता है. लेकिन आपका बैठना ज़रूरी है उसको नॉर्मल बिहेव करने के लिए और नॉर्मल. My son is extremely hyperactive. He does not sit for long, does not have attention, and does not follow instructions. बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, बिल्कुल सुनता नहीं, हर वक्त चलता फिरता रहता है और बिल्कुल अटेंशन नहीं देता. My son has self-injurious behaviors. What should I do? बच्चा अपने आप को मारता है, अपने आप सिर पे थप्पड़ मारते हैं, अपने आप को काटते हैं, बहुत सी चीजें सेल्फ इंजरी करते हैं, अपने आप को इन्फेक्ट करते हैं. ये भी लगता है कि क्या इनको दर्द नहीं होती. इस तरह के बिहेवियर्स हैं. My son hits himself on his chest with both hands whenever he needs something and cries when he does it. अपनी छाती पे अपने हाथ मार मार के अपनी चीज बताने की कोशिश करता है जब वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता. My son bites, punches, kicks, and has other aggressive behavior. What can I do? काटता है, ठुड्डे मारता है और इस तरह के फिजिकल. And last question we received. My son gets angry and then has convulsions. मेरा बच्चा गुस्से में आता है और गुस्से में आके उसको दौरे पड़ जाते हैं. तो मैं उसके लिए क्या करूं? So before I get into kind of what we actually recommend that you consider doing, let's talk about some things that are what we consider common misconceptions. अब वो बताएंगे कि कॉमनली हमारे को गलत फहमियां क्या-क्या हैं. One common misconception is that conventional discipline works. Not judging any approach to discipline. However, what we see in our clinic is sometimes if a parent comes in and has a child, let's say, who is hyperactive, you want him to sit and he doesn't want to sit, they may say, well, we spank him. And my question is always, is it working? And most of the time it's not working. And when conventional discipline, whatever your choice of discipline is, when it's not working as you'd expect, sometimes that cues us into maybe there's something else that we're missing, something else that we need to be addressing. जो हम सोचते हैं कि इस बच्चे को हम डिसिप्लिन करना चाहते हैं कि अब हम इसे बोले बैठ जाओ, वो बैठ जाए, और वो करता नहीं है, तो क्या इस चीज़ को हमें किस तरह से हैंडल करना है और क्या इसको डिसिप्लिन समझना है या इस तरह से समझना है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा. And that ties into the next thing.
is there are some things that our children, our loved ones with TSC, there are some things that maybe they won't do, maybe they are literally refusing to do, but then there are some things that because of their condition they literally can't do, and we need to sort out what behaviors are can't behaviors versus won't behaviors. तो इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो बच्चा कर सकता है, कुछ चीजें होती हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है, वो कर नहीं पाता। तो दोनों चीजों में हमें फर्क समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या चीजें हैं जो वो कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा, और क्या चीजें हैं वो कर ही नहीं सकेगा क्योंकि उसकी समझ उतनी नहीं। Next is, I put risperidone here. It's a medication choice. I'm not just picking on risperidone. But a common misconception is that the medication or any medication is going to fix every behavior. It's a much bigger concern than that, and we have to be a bit more comprehensive. दवाइयाँ बहुत सी होती हैं जो बिहेवियर को फिक्स करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन अकेली दवाई इन चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकती क्योंकि ये सिंपल सोल्यूशन उनका नहीं आता। तो इसके अंदर हमें बहुत सी और चीज़ें, बच्चे के इर्द गिर्द का हमें अपना बिहेवियर उसे कैसे हैंडल करते हैं वो भी बदलना पड़ता है, ना कि सिर्फ दवाई। In tuberous sclerosis specifically, because there are so many other concerns, sometimes families will say, well, we're not dealing with this right now, we'll just wait and see. I call that a common misconception because oftentimes when we wait and see if there is a concern, there's a wait to get an evaluation, there's a wait to get a therapy, there's a wait to change schools. And I advise parents to screen early and then have an awareness of what your local resources are. And you may never need them, but if you do, it's better to be equipped and prepared than to just wait. मतलब क्या इस चीज़ को हमें अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए जब तक बिहेवियर्स खराब हो गए, या हमें आसपास देखना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके पास हम जा सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, और उनको आसपास समझना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके समय पे जाना ज़्यादा अच्छा है। Mild versus severe tuberous sclerosis, and I do put mild in quotes because for a long time people have thought that if someone has less symptoms of tuberous sclerosis, then there's no need to look for TAND. And I have patients in my clinic, I have the privilege of seeing both children and adults, and there are definitely adults in my clinic who are very high functioning, a pharmacist, a physician, nurses, people who are working. And when I talk to them and we talk about the TAND checklist, they say, I didn't have all of these other symptoms. I didn't hit people or hit myself, but I'm very, very anxious. And sometimes I have trouble relating to folks around me. I don't understand some of the body language or what people mean by certain jokes. इसमें ये बताया कि सिवियर और माइल्ड ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में ये सिम्टम्स जो अभी हम बता रहे हैं ये अलग हो सकते हैं। माइल्ड में भी बहुत सारे हो सकते हैं, सिवियर में भी कम हो सकते हैं। तो हमें इनको अलग से इवैल्यूएट करना है, देखने के लिए कि ये वाले सिम्टम्स कितने हैं ताकि इनका समय पे इंटरैक्शन और इनकी समय पे समाधान हो सके। Another common misconception that I like to call one size fits all. I love social media. I love the positive aspects of it. But sometimes when a parent or somebody may report, well, this really works for my child. And then other people try to adopt that same thing and says, well, it should work for my child. Right now in the U.S., a big thing is the cannabidiol oils. They're everywhere, and people think they work for everything. And, I don't know exactly what all they might be helpful for, but I think it's a mistake, a misconception to just take that one thing and apply it to everything. जैसे हम आपस में सुनेंगे कि मेरे बच्चे को इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ, हर एक वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चे को वही चीज़ फ़ायदा करेगी। उसको सिंपली अप्लाई करना हर वक्त सुन के ठीक नहीं, उसको इवैल्यूएट होना चाहिए कि जो सोल्यूशन आपने सुना है वो आपके बच्चे में कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। More is better. For some families, they're not getting really any therapies, but then for other families, they may be doing too much therapy to the exclusion of things that might make their family feel more whole. So having a nice dinner or having a vacation or spending time just
playing. Having more therapy is not always better. It needs to be a balance. कि ये कुछ सोचते हैं कि मिसकंसेप्शन ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा थेरेपी अच्छा ज़रूर कर देगी, तो ये ऐसे नहीं है। थेरेपी और लाइफ कैसे बिताता है फैमिली टुगेदर, दोनों का बैलेंस करके करना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। Another one is outings and travel. Sometimes when individuals have children or young adults who have behaviors, they cut themselves off from outings. They cut themselves off from travel. And those things shouldn't be cut out of life. The rest of us need to learn to adapt and be welcoming. Even in this very room, if a child has a tantrum, we're here for a reason. It's okay. They're not disturbing me. What ways can we support that family so they can still engage and listen and not feel like they have to run out of the room? जब हम बाहर जाते हैं, कोई फैमिली आउटिंग होती है, किसी शादी पे जाते हैं, हमें महसूस होता है कि ये बच्चा वहाँ जाके थोड़ा मिसबिहेव करेगा, इसको नहीं ले जाएं, इसको घर छोड़ के जाएं, ऐसे करें। इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि उनको सब जगह के लिए ले जाओ और उनके साथ एडजस्ट करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। And then last misconception is that TAND is untreatable. There is a way to approach TAND. You know, there's no need to give up. You know, it's not easy, but it's not untreatable. ये हम सोचते हैं कि ये जो सारे बिहेवियर जिन्हें हम टैंड्स कहते हैं, ये बिल्कुल इलाज के लायक नहीं, ये चीज़ गलत है। इनमें इलाज है, इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। Okay. So what's our diagnostic approach? Couple of things. One is we always want to just do the simple medical. You know, make sure that labs are normal, that they're physically healthy, eating well, sleeping well. We start there first. इनमें टेस्टिंग से हम शुरू करते हैं कि ये टेस्ट करें, सारे टेस्ट पर उससे शुरू करते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, मतलब ये समझना। Second is the neurodevelopmental examination. So what's the neurologic exam like? What sorts of things are they doing developmentally when we screen in the clinic? न्यूरो डेवलपमेंटल एग्जामिनेशन इनका बहुत ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या इनकी कमजोरियां हैं, कहाँ पे ये है इस लेवल पे। And then all of the TSC medical evaluations that Dr. Kruger pointed out in his talk, especially getting that brain MRI, because sometimes there can be an abnormality on the brain MRI that's manifesting as a behavior. सबसे ज़रूरी इनमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो ब्रेन की MRI है, क्योंकि कई दफ़ा जहाँ पे ब्रेन में लीजन है वो बताता है कि बिहेवियर का वो कारण हो सकता है या मिर्गी का कारण हो सकता है। And as we mentioned, very important to have the psychological information. A child may be 10 years old, but functioning, they may be more like a 5-year-old. And we need to know that information so that we can set appropriate expectations that challenge our children, but without stressing them. ये बच्चों की मेंटल एज, इंटेलिजेंस, ये चीज़ें चेक करनी चाहिए, डेवलपमेंटल एज चेक करनी चाहिए, देखना कि वो 10 साल का हो सकता है, लेकिन उसकी मेंटल एज 4 साल, 3 साल की हो सकती है, तो हम उसे 10 साल का बिहेवियर और आउटपुट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, हमें उसकी उम्र के हिसाब का एक्सपेक्ट करना होगा। And then speech and language evaluation, we want to know exactly how our loved ones, not only how they express themselves, but actually what are they understanding from what they're hearing. ये इवैल्यूएट करना ज़रूरी है कि समझदारी हम जो बोलते हैं उसमें कितनी है, और जो हम बात करते हैं कितनी उसको समझ आती है, और कितना वो उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है appropriately. Okay. And then just some special diagnostic considerations. In both of these cases, these children are essentially nonverbal. So one thing that we want to consider is an assistive technology evaluation. बहुत से बच्चे बोलते नहीं हैं इस बीमारी में, और जब वो नहीं बोलते तो फिर एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन होती है जो ना बोलने वाले बच्चों की मेंटल एज, डेवलपमेंटल एज को इवैल्यूएट करती है। And these assistive technology devices that typically a speech language pathologist who's trained assistive technology can help us with, give us an idea of what sorts of devices. It can be something as complex as an iPad with an app that helps a child communicate, or it could just be a picture of yes and no. It empowers the child to be able to communicate with us. So ये चीज़ें बहुत सी devices हैं
ये पिक्चर कार्ड्स हो सकते हैं जिसे तुम यस नो करवा सकते हो, ऐप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आईपैड हो सकता है, जिससे आप उसे पहचान समझ सकते हो कि समझ कितनी है. And then in these next questions, the common theme here in all of these is either aggression or self-injury. One of the special things that we have to consider is whether or not our child or loved one is in some sort of pain that they cannot express. कई दफ़ा इनको बहुत गुस्सा आता है, अपने आप को मारते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है उस वक्त कि क्या ये आदत है या उनको किसी प्रकार की दर्द है जिस वजह से ये कर रहे हैं. The top on that list is we want to get an abdominal x-ray and make sure that our loved one isn't just constipated and is having pain from that. बहुत से बच्चों को कब्ज होने की वजह से पेट में दर्द होती है और इस तरह के बिहेवियर होते हैं. उसके लिए कभी-कभी एक्सरे की ज़रूरत पड़ सकती है कि क्या पेट में गैस फूली हुई तो नहीं. Other things to check for, dental exam to make sure there's no cavities or an abscess. दांत में दर्द हो सकती है, दांत में. Feeling the skin to make sure there's no areas of point tenderness that might indicate a broken bone or a lesion that we didn't see. अपने बच्चे को छुइए, देखिए कि कोई बॉडी पार्ट टेंडर तो नहीं कि उसकी वहाँ से दर्द हो रही है. Checking the scalp and nails for lesions that we may have missed. उसके सिर पे हाथ फेरिए, उसके हाथ नाखून वगैरह देखिए, किसी चीज में चोट आई हो जिसकी वजह से उसे दर्द हो. And also maybe even looking at the urine to make sure there's not a urinary tract infection that could be causing back pain. पेशाब में इन्फेक्शन हो, ये भी देखना चाहिए अगर वो बार-बार इस तरह से हाथ लगाए. Now these questions all have a similar theme too, about understanding, expressing themselves, having sensory issues. If we take these questions as a whole, what are some possible diagnoses that we have to think about? जब ये सारे सिम्टम्स हम देखते हैं, जैसे कि हाथ में हिलाना, करना, मारना, बिहेवियर, तो इसके अंदर हमें क्या पॉसिबल डायग्नोसिस होते हैं वो अभी बताएं. So here are just some thoughts. Could be intellectual disability with limited generalization. उनकी IQ कम हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम. Autism with echolalia, where they're just repeating phrases that they don't really understand. ऑटिज्म हो सकती है जिसमें बार-बार एक ही चीज बोलते हैं या जो आप बोलते हैं उसका जवाब नहीं देते, क्वेश्चन रिपीट करते हैं. Receptive expressive language delay or this actual disorder. समझना जो हम बोल रहे हैं उसको समझना या वापस जवाब देना, उसका डिसऑर्डर. A language regression where they gained speech and language but then lost it when they had a really big seizure. रिग्रेशन होती है कि एक चीज आई उसके बाद चली गई, मतलब उनके शब्द थे, उनकी कुछ लैंग्वेज थी, कोई मेजर दौरा हुआ जिसके बाद ये रिग्रेस कर गए. Some children can be anxious and have what we call a pragmatic language impairment, where they can speak and understand, but some of the subtle aspects of language, like body language, jokes, social cues, they may misunderstand those in a pragmatic language impairment. So, इस तरह की लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी हो सकती है कि मतलब वो फाइन चीजें नहीं समझ पाते, लेकिन ग्रॉस लैंग्वेज वो कम्युनिकेट कर पाते. And then there are some children who have selective mutism. And in selective mutism, they understand and can speak just fine when they're comfortable. If they're uncomfortable, like with a stranger, they don't say anything. They withdraw, they don't interact. And when you look at them in that setting, they may seem like they have autism, but they really don't. कुछ बच्चों को ये होता है कि वो बोलते नहीं जब उन्हें कहा गया बोलने के लिए, लेकिन वही चीज़ वो घर के अंदर अच्छे से बोलेंगे. इसे सिलेक्टिव म्यूटिज्म कहते हैं कि मौके पे नहीं बोलते जब उन्हें कहा जा रहा है, लेकिन वो चीज़ें कर सकते हैं दूसरे माहौल में. And when we talk about our treatment approach, there's 3 categories: functional, symptomatic, and organic, and I'll go through each one. So functional means what in the environment might be maintaining the behaviors. That is, what are the functions of that behavior? ये 3 हिस्सों में ये डिवाइड करेंगी. वो पहला जो है वो फंक्शनल है, उसके बारे में वो बताते हैं. Okay, looking again at the child might be aggressive and self-injurious. It could be that they're not communicating. गुस्सा में हो सकते हैं और कम्युनिकेट नहीं करते. We talked about pain already. दर्द, Anxiety, फिक्र, impulse control, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना. attention seeking, and even escape.
If a child feels pretty overwhelmed, sometimes their behavior is their only way to get out of that situation. वो अपने जो मौके पे है उससे निकलने के लिए कुछ तरह से अपना एस्केप रूट बनाते हैं या बात बनाते हैं जिससे कि वो निकल सकें उस मौके से। स्कूल नहीं जाना तो वो कुछ ना कुछ करेंगे उससे निकलने के लिए। And so what are the functional treatment types? When we talk about functional treatment types, we're talking about everything that we do that's not medicine. अब ये है नॉन दवाइयों से क्या-क्या चीजें हम कर सकते हैं बिना दवाई के। So first we want to know how the child is functioning at home versus school versus community. तो ये करने के लिए हमें पता लगना चाहिए कि वो घर में कैसा बिहेवियर है, स्कूल में कैसे है और सोसाइटी में कैसे है। We want to consider the need for a behavioral therapy. One type is applied behavioral analysis or ABA therapy, but there are similar ones too. कुछ इस तरह की चीजें हैं जो इवैल्यूएट करती हैं। एक इसे ABA कहते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, या और तरह के भी कर सकते हैं जिससे ये पता लगेगा कि ये फंक्शनली किस टाइप का है। Ensure a language-rich environment and labeling, those kind of go together. Even if a child doesn't have a single word, sing to them, explain to them, read to them, show them things, put words on their favorite things, and every time you're handing them a cup, show them the word cup. अगर वो नहीं भी बोलता फिर भी उसके साथ आप बहुत सारा लैंग्वेज में कम्युनिकेट करिए, गा के, बोल के, पिक्चर्स दिखा के, ऑब्जेक्ट्स का नाम लेके, ताकि उसे रजिस्टर करने लगे कि इन चीज़ का क्या है। पिक्चर दिखाएं कप की तो बोलिए कप, और इसे कहिए पॉइंट। And along that same line, considering a visual picture schedule. These are available freely online. This is just one where you say, well, first we're going to do this, then next, then last, and then, and you see you can move the pictures over as they finish so they can feel successful. इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिसमें ये पता लगता है कि सीक्वेंस सा सिखा जाता है कि पहले क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। इस तरह की पिक्चर्स नेट में मिल जाएंगी आपको। We talked about a communication device, but then let's also think about like positive reinforcement. Again, back to a different way of discipline, rather than pointing out the things that they don't do, encouraging and praising them for the things they do well, even if it's just a little bit towards the goal. अगर वो नहीं कुछ कर पाते तो उन्हें गुस्सा करके, बुरा कह के, गंदा कह के नहीं करना चाहिए। उन्हें एक पॉजिटिव इनकरेजमेंट देनी चाहिए छोटी से छोटी चीज़ की जो उन्होंने की है। Being very patient with our children. You would be surprised when I talk to children who are having some behaviors and ask them about like how they feel. They don't want to be that way. They want to do a good job. So just us being patient with them in the process. बहुत दफ़ा पेरेंट्स की पेशेंस कम होती है इन बच्चों के साथ, तो अपनी पेशेंस उनके लिए बढ़ाइए क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है। And then reassessment. So after we've done all these things, rather than just go away and say, hey, good luck, I hope you make it, we want to look again. How are you guys doing in 6 months? How are you doing in 12 months? Should we change anything or reassess? वापस ज़रूर जाइएगा रीइवैल्यूएशन के लिए कि जो आप कर रहे हैं उन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है या कोई स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। Okay, so that's functional. Symptomatic is really what are the targetable underlying medical diagnoses? And here we're starting to think about medicine. वो तो हुआ फंक्शन। अब क्या है कि उनको पहले जब आपने कैटेगराइज कर लिया कि क्या इनके बिहेवियर्स को हमें टारगेट करना है, उस प्रकार से दवाइयाँ दी जाती हैं। So if you take all of these questions, one theme that kind of runs through these questions could be anxiety. And one way to target anxiety would be medication management with SSRIs or medications like fluoxetine. तो अगर उसमें एंजाइटी निकलती है तो उसमें कुछ कैटेगरीज ऑफ दवाइयाँ हैं जैसे फ्लूऑक्सीटिन जो इनको देनी चाहिए, SSRIs और भी होते हैं, तो इनमें से अपने डॉक्टर से मिलके ये आप ले सकते हैं। And if we're doing behavior management, targeting that to anxiety as well. तो इनके लिए समझ सिखाने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जो आप इनके साथ कर सकते हैं। Another example in a child who has hyperactivity, if it is ADHD, we might be thinking about medication management with stimulants versus non-stimulants and behavioral therapy targeted to ADHD. अगर वो हाइपर एक्टिव है तो उसमें दो सेट्स ऑफ दवाइयाँ होती हैं, कुछ स्टिमुलेंट्स कुछ नॉन स्टिमुलेंट। उनमें से क्या ज़रूरत है आपके बच्चे को वो डॉक्टर से संपर्क करके लीजिएगा और उसके साथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन कीजिए।
In tuberous sclerosis, now that we know the underlying neurobiology, we also want to consider are TSC specific medications indicated. That's what I call our organic approach, that medications that target the underlying cause. अभी तक तो हम बात कर रहे थे जनरल दवाइयों की, बट इस बीमारी की खास कुछ दवाइयां हैं, ये किस कंडीशन में इन बच्चों को देनी चाहिए वो बताएं. So let's take the example of the child who gets angry and then has convulsions. So are we using medications that target the underlying cause of epilepsy? And here are some examples of that. And then could he have an astrocytoma that needs to be targeted with mTOR inhibitors as well? इन बच्चों को कभी-कभी ब्रेन के अंदर ट्यूबर्स होते हैं जो बड़े हो जाते हैं ट्यूमर की तरह. उस वक्त इनको जो स्पेसिफिक दवाइयां रिसेंटली आइडेंटिफाई हुई हैं वो देने से फायदा हो सकता है. When it comes to building your team, and I'll just put this slide up here for you to take a picture of in the interest of time, there's a whole host of non-physician partners that you may be choosing from depending on your child's functional level and what you're seeing. And these are the groups of folks that can be helpful in that regard. इसके अंदर आपके साथ नॉन डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे, बिहेवियर स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो आपको इन चीज़ों की मदद कर सकते हैं. And then there's the physician side. So these are the different physicians that you might find yourself working with, and each person has their own niche, and each person has their own approach to TAND. कि अलग-अलग फिजिशियंस की इन दवाइयों के यूज़ की अलग-अलग अप्रोच हो सकती है, जाहिर है. So what are the takeaways? Okay. This picture is just a silver lining. I went through a lot of things, and sometimes those things can kind of weigh us down. Like, oh my goodness, I got to think about all this stuff. But there's always a silver lining. And the main thing that if you don't take away anything else from this talk, maintain your hope. Hope is free. You know, there's no reason to not hope. People can get better. And I think of hope as an acronym. There are things that you can do. One is reach out for help. Parents, extended family, your professional network. होप ज़रूर रखिए हर तरह से. तो आप अपने और पेरेंट्स से मदद ले सकते हैं और लोगों से मदद ले सकते हैं, प्रोफेशनल मदद ले सकते हैं. Working together with an interdisciplinary coordinated medical team. पूरी टीम के साथ अपने संपर्क में रहिए जो आपकी मदद करेंगे. Reaching out to the TS Alliance of India, TSC International, your regional TS Alliance. ये इस बीमारी के अलायंसेस हैं इंडिया के तहत में, इंटरनेशनल, उनसे भी आप रीच आउट करके मदद ले सकते हैं. And social media as well. So what are the opportunities? We have opportunities to help others. For everybody who's in this room, I'm sure there are many more people who wanted to be here and couldn't be here. So share this information with them. And then partner with us as we do research studies to help figure out new treatments. तो इसमें आप संपर्क में रहिए, एक दूसरे की मदद करिए और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाइए. And pace yourself. Think marathon. It's not a sprint. That's why I broke it up into the different things that we can do. We also have to time those things because we want you to have a balanced life as well. बड़ा सोचिए, आगे का सोचिए. Expectations. Be ensured that when you approach these developmental professionals, whether they're physicians or non-physicians, being clear about what your expectations are. And that's kind of what you're doing when you do the TAND checklist. You have your 3 goals. This is what I'm working on. Who do I need to work on it with me? And not focusing on the worst, okay? Just keep in mind that things can get better and things will get better. तो आप अपने ये जो लिस्ट दी है उसके तहत में देखिए और समझिए कि कौन आपको मदद कर सकते हैं. होप नहीं छोड़िए, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और ये अपने आप को निराश नहीं करें. So what are future directions? Here's one thing that I think is hugely important, is that as a global community, I really want families to not feel that they're limited because of where they live. And it shouldn't be related to how much you can pay. And one thing that I'm grateful to be a part of is called the Tandem Project. And Shobha from the Tuberous Sclerosis Alliance of India is a part of it. And here's a picture. And what it is a global consortium
working together, representing every part of the world. And one thing we want to do is try to get this TAND checklist into an app, and then also put our heads together as a consortium about how we can get information to folks around the world that is clinically helpful, but also relevant and achievable for where you're living. And with that, I thank you. शोभा इस अलायंस की इंडिया में है, उनके साथ आप संपर्क करके आगे चल सकते हैं। Yes. Thank you. Any questions after this?